Hello everyone. I hope आप लोग अच्छे हो and you people are practicing problems, learning concepts. Let us for now focus on this question. This one is from rotation, as you can see. And in order to solve this question, we need to analyze the situation very carefully. चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. सो देयर इज ए नॉन यूनिफॉर्म प्लान. कहने का मतलब उसका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं होगा. इट इज एट पॉइंट सी सच दैट AC इज इक्वल टू R. It is placed on a step with its one end A supported by a cylinder of radius R as shown in figure. So ऐसा सीढ़ी ऐसा होता है ना. So let us talk about the last step. Here is the plank kept, and then there is this cylinder at what? This cylinder is kept at this on this ground. Done it? So it is like this. The center of mass of the plank is just outside the edge of the step. So center of mass is just here. Okay, the cylinder is slowly rolled on the lower step such that there is no slipping at any of its contact. So this plank won't slip on the surface of cylinder. Rather, it will be there will be no slipping there. Calculate the distance through which center of cylinder moves before the plank loses contact with the horizontal surface of the upper step. So हमें ये बताना है कि डिस्टेंस थ्रू विच सेंटर ऑफ सिलेंडर मूव्स, ये सेंटर कितने डिस्टेंस से आगे की तरफ जाएगा बाय द टाइम दिस प्लैंक विल लूज कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस. तो सबसे पहले तो हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि लूजिंग कॉन्टैक्ट का सिचुएशन कैसा होगा. डन है. एंड सेकेंड थिंग वी नीड टू कंसिडर कि अगर सर्टेन सर्टेन सिचुएशन में अगर ये प्लैंक सर्फेस को लीव किया है तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस फॉरवर्ड गया होगा. वो दो चीजें हमें फिगर आउट करना है, राइट. सो चलो फर्स्ट की तरफ पहले बढ़ते हैं. सो इस सिचुएशन में आप लगा लो, since there is no slipping, we will say that whatever is the velocity of this point of the cylinder, so if it is going with angular velocity omega and going forward with center of mass velocity VCM, then VCM will be equal to omega R. You can consider here, and at the top point these two velocities sorry, these two velocities will add up to give you VCM plus omega r, right. So top पे velocity क्या होगी तुम्हारा 2 VCM और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है VCM. और इस टॉप पॉइंट पे तुम्हारा प्लैंक का हर पॉइंट कोई एक ऐसा यूनिक पॉइंट होगा विच विल बी टचिंग, राइट. और जो पॉइंट तुम्हारा सिलेंडर से टच में है उस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी 2 VCM बिकॉज देर इज नो स्लिपिंग हियर. अगर स्लिपिंग नहीं है तो प्लैंक का जो पॉइंट इस सरफेस से कांटेक्ट में है दैट पॉइंट शुड हैव सेम वेलोसिटी एट दैट ऑफ सिलेंडर. सो दिस पॉइंट विल हैव वेलोसिटी 2 VCM, and this point on the cylinder is having velocity 2 VCM, and so relative velocity will be 0, there won't be any slipping. So that we have figured out. अब आप देखो सपोज कर लो इस इंस्टेंट पे ये पॉइंट टच कर रहा है. व्हाट यू विल बी ड्राइंग हियर, फोर्सेस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. सो लेट्स से नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग हियर N1, यहाँ पे कांटेक्ट पे है, एंड देन प्लैंक इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस. लेट्स से नॉर्मल रिएक्शन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट N2. Okay, and let's talk about friction also. I mean here friction is acting. Let's say this is F. Okay, so let us talk about torque of all these forces acting on the cylinder. So चलो torque हम किस point के around निकाल रहे हैं. Suppose कर लो इस point के around निकाल रहे हैं, plank के A end के around. So N1 और F का torque 0 हो जाएगा because these two forces are passing through this point. Now mg force will also be there. So torque of mg and N2. mg का torque देखो क्या होगा, ये this one, and this is what, this is this one. So let's say ये distance हमें कोई भी instant पे, इस instant पे तो r है ये distance, so this is r. So this is mgr in which direction, anti clockwise, and this distance आप कुछ भी x ले लो, so n2x in the clockwise direction. And simply you can see here Planck won't rotate, right. So these two has to be equal. So mgr is equal to n2x. Done it? So whatever torque will be acting on this plank has to be 0. Here mgr is equal to n2x. लेकिन अगर ये n2 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, तो ये torque भी हमें 0 मिलना चाहिए. और ये torque 0 कब होगा? When I mean m cannot become 0, g cannot become 0. r को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, राइट. सो अगर सेंटर ऑफ मास कॉन्टैक्ट पॉइंट बन जाए फॉर द सिलेंडर, डन है, देन टॉर्क ऑफ mg विल बिकम 0. मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ अगर तुम्हारा प्लैंक यहाँ पे ऐसे चल के ऐसे आ जाए such that this point is the center of mass, so mg will pass from this point
and normal reaction is this one, right? And then friction is this one. All are passing through this point, right? So if all are passing through this point, then you will be taking what? Torque of all these three forces is zero. कोई भी अगर यहाँ पे normal reaction लगता है तो उसका torque non-zero हो जाएगा. Done है? And in that case, rotational equilibrium won't be possible for the Planck. So we will say that जब center of mass position is touching the cylinder, is the contact point for the cylinder. In that case, I mean this will leave the surface. ये surface को क्या कर देगा? Leave करेगा. ठीक है? So I mean it will lose contact when center of mass has moved to this position. So चलो अब हम चलते हैं यहाँ पे. So center of mass of the Planck और कह सकते हो Planck का motion. So Planck का displacement with respect to center of mass of cylinder. So let's say with respect to center of mass of cylinder is equal to how much r? This has moved by distance r. Done it with respect to this. Okay, so this is this. Now you know that displacement of Planck with respect to ground, if this is xpg, then this will be 2 times displacement of center of cylinder with respect to ground. क्योंकि एक की velocity इसकी velocity double है इससे, right? So I mean xpg will be 2 times xcg. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, we have to calculate what? We have to calculate distance through which center of cylinder moves. So we have to calculate this xcg. ठीक है. नाउ यू जस्ट ब्रेक दिस वन. इसको आप क्या लिखोगे? xp minus xc is equal to r. xp what? xp is xpg, right? Displacement of p with respect to the ground. Nothing is mentioned, means this is g, this is g, right? So this is equal to r. Now here you can write what? xpg can be written as r plus xcg, and this is equal to 2xcg. So basically xcg is equal to r, and you will see xpg is equal to 2r. So this point with respect to Planck with respect to ground will move 2 times than that of center of cylinder with respect to ground. So this will be the thing. ऐसे भी आप directly बता सकते थे, but I have gone with the mathematics. So you can see here. Okay. So I hope you're able to make sense of the question now, and now you're able to understand it. But if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Bye bye. Take care of yourself.